So class, we'll begin with question number 2 of exercise 3.3. That is, हमें जो भी क्वेश्चन नंबर्स हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन, रिमेंबर स्टूडेंट्स, you will be factorizing the numbers with only prime numbers in this case, and we will always begin with the smallest prime number. तो प्राइम नंबर्स हमें पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. ये होते हैं prime numbers. These are some examples. So in the case of 72, हमें पता है it ends with an even number. So we will factorize it first with the prime number 2. We know 2 3s are 6 होता है. Carry 1 because it's 7 here. तो 36. 2 6 are 12 होगा. Next again it ends with an even number. So we'll write 2 here again. We know 2 1s are 2. यहाँ पे 3 है तो 1 less, that is carried over here, तो ये 16 हो जाता है. तो 2 8s are 16. Next number comes as 18. We know 2 9s are 18 होता है. Next हमें दिखता है that it is not an even number, so we move on to the next prime number, that is 3. So 3 के लिए if we know 3 3s are 9 होता है, and then 3 1s are 3. If we have to represent, तो हम ये सारे numbers यहाँ पे लिख देंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So 72 is represented as a product of factors that are prime numbers here. Now next is 172. तो हमें दिखता है that it is ending with an even number. तो we'll begin with 2. We know 2 8 16 होता है, but it's 17, तो हम 1 कैरी करेंगे. 2 6 12 होगा. Next again we can do it with 2 because it's an even number, so we write 2 4s are 8 and 2 3s are 6. अब यहाँ पे even number नहीं है, and let's check with the next prime number, that is 3. 4 plus 3, that is 7, which means it is not divisible by 3 also. अगला प्राइम नंबर हमारे पास है कौन सा? 5. 5 से भी नहीं है because it does not end with 0 and 5. Next prime number is 7. It doesn't come in the table of 7. It doesn't come in the table of 11. It doesn't come in the table of 13. You've been practicing tables every day. It doesn't come in the table of 17 and 19 also. So अभी इसके बाद that means we checked with other numbers and it is not coming anywhere. That means 43 is a prime number. इसके और कोई factors नहीं होते apart from 1 and itself. तो here 172 is represented as the product of prime numbers 2 and 43. As you practice prime factorization, आपको बड़े बड़े prime numbers like 43 भी पता चल जाएंगे. So try to remember so that हमें हर बारी इनसे divisibility test करने की ज़रूरत नहीं है. We'll save on time. Next question is 450. Again ends with an even number but also 0. But that does not mean that आप 5 से factorize इसको करेंगे, because we'll always start with the smallest prime number. So smallest prime number से अगर ये divisible है तो we will start with that only. So it is divisible by 2 because 0 is an even number. So we get 2 2s are 4. 2 2s are 4 again. Carry 1 because यहाँ पे 5 है, तो 2 5s are 10. Next it is ending with 5 again, but we will first check कि ये किसी और 5 से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं. सो फॉर चेकिंग विथ 3 हम ऐड करते हैं 2 + 2 + 5. आंसर आता है 9. सो दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3. तो अब हम 5 से नहीं 3 से करेंगे. तो 3 वी नो 2 तो नहीं हो पाएगा, सो वील डिवाइड द फर्स्ट 2 डिजिट्स टुगेदर, दैट इज 22. वी नो 3 7s are 21 होता है. 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो ये नंबर 15 हो गया. देन 3 5s are 15. नेक्स्ट नंबर कम्स है 75. अगेन वी विल फर्स्ट चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. जब हम प्लस करते हैं 7 + 5 12 आता है. 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे. वी नो 3 2s are 6 होता है. कैरी 1. देन 3 5s are 15. अब हम वापस से 3 से चेक करते हैं. 5 + 2 दैट इज
7 which is not divisible by 3. Now we can move to the next prime number, that is 5. We know 5 5s are 15 and then 5 again we stop over here. और हम 450 को प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 2 into 3 into 3 into 5 into 5. So these are all prime numbers and हम start हमेशा smallest prime number से करेंगे till the time it is divisible by 8. Next is 980 ends with a 0, that means it is divisible by 2. If we divide it by 2 we get 490. अगेन यहाँ पे 0 आता है, हमने 2 से वापस करा, 2 से करने के बाद 2 2s are 4, 2 4s are 8, कैरी 1, देन 2 5s are 15. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं दैट इट एंड्स विद 5. वील चेक विद 3 फर्स्ट. 4 + 5 9 + 2 11 होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर में मूव करेंगे, दैट इज 5. 5 से जब डिवाइड करते हैं वी नो 5 4s are 20 होता है, तो अब हमारा यहाँ 4 कैरी हो जाएगा, दैट मीन्स 5 9s are 45 होता है. नेक्स्ट हम 5 से नहीं कर सकते तो हम 3 से पहले चेक करेंगे. 9 + 4 होता है 13 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 7. वी नो 7 7s are 49 होता है, so we write it like this, and again 7 into 1 is 7. 980 will be represented as a product of these numbers, so that is how you represent it. Next number is 8712. Ends with an even number, so we'll go with 2. 2 4s are 8, 2 3s are 6, carry 1, 2 5s are 10, यहाँ पे 11 है, 1 again, and 2 6 are 12. Again ends with an even number, तो हम 2 से करेंगे. 2 2s are 4, again 2 1s are 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ कैरी 1 हो जाएगा, तो 2 7s are 14, कैरी 1 again because 15 है, 2 8s are 16. 2 से वापस कर सकते हैं because it ends with an even number, so 2 1s are 2. अब यहाँ पे 1 है एंड अगर हमें इन दोनों को साथ में लेना है तो व्हाट वील डू इज वील राइट 0 ओवर हियर और हम 17 को नेक्स्ट नंबर कंसिडर करेंगे. सो दैट विल बी 2 8s are 16, बट यहाँ 17 था तो यहाँ पे हम कैरी 1 कर देंगे. नाउ 2 9s are 18. अब हमारा इवन नंबर स्टॉप हो गए हैं. देन वील चेक विद द नेक्स्ट प्राइम नंबर. तो 9 + 9 1 + 8 + 9 होता है 18. 18 is divisible by 3, that means this number will be divisible by 3. तो हम जब 3 से डिवाइड करते हैं we know 3 3s are 9, but this is 10, so we'll carry 1. 3 6s are 18 and 3 3s are 9 again. वापस से we'll check if it's divisible by 3. 3 + 6 9 + 3 12. 12 is divisible by 3, that means हम लिख सकते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3. Now 1 to 1 हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है, so we write it like this, and 11 1s 11. तो 8712 will be represented as a product of prime numbers 2, 3 and 11 twice. Now let's do this one again. It's a very big number but it ends with 0. that does not mean हम 5 से करेंगे. we'll start with the smallest number, जिस प्राइम नंबर जिससे कि वो डिविजिबल होगा. ends with 0, so even, that means कि we can do it with 2. now 2 के लिए हम ये दोनों नंबर साथ में लेंगे क्योंकि 1 तो आता नहीं है. so 2 6 are 12, carry 1 because 13 है. 2 7s are 14, 15 है तो carry 1 again. 2 5s are 10 and 0. Again we can do it with 2 because it ends with an even number. 2 3s are 6, again 3s are 6 because 7 है तो 1 carry. 7s are 14, 15 है तो 1 carry here. 2 5s are 10. Now we'll check whether it is divisible by 3 or not. 3 + 3 is 6 plus 7 is 13
plus 5 is 18, which is divisible by 3. So we'll write 3, 1s are 3, 1s are 3, 2s are 6 and carry 1 because यहाँ 7 है, and 3 5s are 15. Again we'll check if it's divisible by 3. उसके लिए हम पहले ऐड करेंगे 5, 6, 7, 8, 9. That means it is divisible by 3 क्योंकि 9 is divisible by 3. So we write 3 here. 1 तो कर नहीं सकते, तो we'll take the first two numbers. So we know 3 3s are 9 होता है, and यहाँ पे 11 है. 11 minus 9 will be 2. तो हम यहाँ पे 2 कैरी करेंगे तो 22 होता है. We know 3 7s are 21, but ये 22 है, we'll carry 1, and 3 5s are 15. Again हम चेक करेंगे 3 plus 7 plus 5, that is 15, which is divisible by 3. Then again हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 1 3 2s are 6, but ये 7 है, we'll carry 1, and 3 5s are 15. Now 125. Again हम 3 से चेक करते हैं. 5 6 7 8, which is not divisible by 3. Then we can move to the next prime number, that is 5. We know 5 2s are 10 होता है, तो यहाँ पे 2 बचता है, तो we'll carry that 2, and we know 5 5s are 25. Again हमारा it is not divisible by 2, it is not divisible by 3. Next prime number is 5. So it will be 5, 5 again, and 1. So it will be represented as a product of 2 into 2 into 3 into 3 into 3, and 5 be 3 times. So that is how you do prime factorization.